Nithyanandam. We welcome all the participants who are with us for today's Uttamottama Seva. The Uttamottama Seva is a grand ritual which is directly described, which is revealed by Paramashiva in Srimad Agama. Paramashiva beautifully describes the best of the best way of offering our worship and gratitude and connecting with him through these rituals. During this Uttamottama Seva, each and every single detail of the ritual is directly revealed by Paramashiva in the Agama. The rituals in KAILASA are being performed by third eye awakened, initiated disciples of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashiva. We request all the participants who are offering the today's Uttamottama Seva, who are the Yajamans of today's Uttamottama Seva, to be seated with your head, neck, and spine in a straight line in a receptive space of gratitude and deep restful awareness in your Ananda Gandha. As the Acharya is offering the ritual on your behalf, you will experience the entanglement, the Shaktipada and the Shaktinipada from the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam, for being able to connect and experience the state, space, powers, being, and the super consciousness of Paramashiva. Before we begin the ritual of the Uttamottama Seva today, we request all the participants to declare the following with integrity and authenticity. If you agree to the following, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that the cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashiva, is the Chinmay Vigraha, embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth of Sohamasmi, that even when I worship, I am him. Yes. Let us now begin with the ritual of the Uttamottama Seva. Please be seated with your head, neck and spine in a straight line, being in the space of gratitude and deep restful awareness in your Ananda Gandha as we invoke the presence of our beloved Swamiji. Nithyanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Nithyanandeshwara Paramashiva Samarambham Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyamam Nithyananda Paryantam Vande Guru Paramparam Lalate Tripundri Nitilakrita Kasturi Tilakaha Swaranmala Dhara Spurita Katikopi Navasanaha Pradhano Dustaram Shirasi Panirajam Shashikalam Pradipas Sarvesham Marunagiri Yogi Vijayate Achamya. The first part of the Uttamottama Seva begins, the ritual begins with the Tattvachmana. The Tattvachmana is a ritualistic cleansing that is performed through which we purify all the 36 tattvas, the principles that constitute us, that help us to move from the Pashu, from our individual soul, to Pati, to experiencing Paramashiva. Next is the Shuklambaradharam, where we pray to Mahaganapati to remove all the obstacles, not only from the ritual of the Uttamottama Seva, but also from experiencing Paramashivatva and manifesting our reality. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyajit Sarva Vignopashantayet Prananayam Ja Om Ham Ishanamurtanam Om Him Tattrishabhaktanam Om Hum Agarhardanam Om Him Vamdevukyanam Om Satyajatamutirnam Om Hamdanam Om Him Shirdenam Om Shikhayanam Om Him Kavachayanam Om Hum Nitirbhyonam Om Hastranamaha Om Ham Ishanamurtanam Om Him Tattrishabhaktanam Om Hum Agarhardanam Om Him Vamdevukyanam Om Satyajatamutirnam Om Ham Tadanam Om Him Shirdenam Om Hum Shikhayanam Om Him Kavachayanam Om Hum Nitirbhyonam Om Hastranamaha
ओम हम ईशानमूर्तानम ओम हिम दत्तशवक्त्रानम ओम हम अगरहृतानम ओम हिम वामदेवख्यानम सत्योजातपूर्तेनम ओम हम हृदयानम ओम हिम शिल्पेनम ओम हम शिखानम ओम हिम कवचानम ओम हम नेत्रेभ्यो नमः ओम हः अस्त्राय नमः. Now, after having performed the pranayama, which is a ritualistic methodological technique which Paramashiva has revealed in the Agama for us to awaken our Kundalini through the systematic breathing process, we perform the Sankalpa, creating a conscious resolution for manifesting our reality from the space of Paramashivatva, from the space of Paramashivoham. Now, being established in the space of Paramashivoham, please be seated with your head, neck and spine in a straight line. You can take a moment, pen down all the realities that you want to manifest through this ritual by offering this ritual of the Uttamottama Seva, by offering the best of your life, the essence of your life to at the divine lotus feet of the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashiva. Please take a moment, note down the desires that you want to manifest. And being established in the space of Paramashivoham, declare that you will manifest these realities in your life. Let us now enter into the Sankalpa. Om Mamopatta Samasta Duritакшयद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्धे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शुभनाम संवत्सरे शुभायने शुभऋतौ शुभमासे शुभपक्षे शुभतिथौ शुभवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशान्तश्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्तृ श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयाण गीयमान छत्र चामर श्रीचिह्न काहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्रानजीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद् ऋषभध्वज स्थापक शैव समयकर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्यवाचक स्वामिनाम अवतारभूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तृ साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर
साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरुपरंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्ममुक्ति स्वर्गपुर स्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञपीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रीलश्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थं तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थं गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानां अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतार भूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव उत्तमोत्तम पक्ष उपचार युक्त पूजां करिष्ये। ओम उपस्पृश्य सकलीकृत्य सामान्यार्घ्यं संस्थाप्य. Now we are witnessing the Acharya performing the ritual of the Sakalikaranam, which is a very special nyasam, which is directly revealed by Paramashiva. During the Sakalikaranam, using the very mantras that form Paramashiva's body, we invoke, we energize our physical body with those mantras to make our body into Paramashiva's body as the Vidya Deha, as the Mantramaya Sharira. After the Sakalikarna, we perform the Samanyarghya Sthapana, during which we purify, energize all the items that we are about to worship, so that we are about to use in the Abhishekam and the Puja to the Supreme Pontiff of Hinduism. Let us now witness the grand Abhishekam to the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. We request all the participants to be seated with the head, neck and spine in a straight line. Be in the space of receptiveness as you witness this grand Abhishekam.
ॐ गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यपुष्टां हरीषिणीम् ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तानिहो बह्वये श्रियम् गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि अथ धूपः ॐ दशाङ्गं गुग्गुलो वेदं सुगन्धं च सुमनोहरम् आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगच्छताम् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्दपरमशिवाय नमः धूपमाग्रापयामि अथ दीपः ॐ सात्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः दीपं सन्दर्शयामि धनैवेद्यम् ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्धिनि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरमाचमनं समर्पयामि ॐ अन्धाय विद्महे परमान्धाय धीमहि तन्नो अन्धः प्रचोदयात् ॐ अन्धाय विद्महे परमान्धाय धीमहि तन्नो अन्धः प्रचोदयात् ॐ अन्धाय विद्महे परमान्धाय धीमहि तन्नो अन्धः प्रचोदयात् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि
Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Around 5,000 years ago, at the end of Mahabharat War, the ancient enlightened Hindu civilization consisted of 10,000 Hindu traditions, or sampradayas, that existed in 56 Hindu nations, 200 Hindu kingdoms, 1,700 Hindu provinces that covered more than 6 million kilometers square of Asia. The Supreme Pontiff of Hinduism, SPH, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, is the reviver of KAILASA, this ancient, enlightened Hindu civilizational nation. KAILASA is an unbroken cultural, religious, historical, civilizational, and sovereign continuation and revival of multiple of these historical Hindu sovereign states and Hindu ecclesiastical entities. The unbroken continuity of these ancient Hindu nations through KAILASA results in the legal recognition of KAILASA as per the international customary law, particularly the doctrine of continuity. The international law, the doctrine of continuity, implies that upheavals and revolutions within a country, changes in government, territorial adjustments, measures taken during military occupation, or other internal transformations do not negate the existence of the country, do not affect the legal personality and international obligations of the country or state. The Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 1978, addresses these principles of the doctrine of continuity as it outlines international law during situation of state succession or continuation. International law recognizes a state's legal personality by recognizing its identity. This perspective extends even during the period when the given state or country is annexed or occupied by a foreign power. Even in such cases, the legal personality of the state is considered to persist, enabling its subsequent re-establishment. Historical examples dating back to the 18th century include cases like Portugal and Genoa that were re-established after the Vienna Congress of 1815.
More recent examples include countries such as Poland, Ethiopia, Czechoslovakia, Albania, and Austria that were re-established after World War II. Even when a nation is deprived of its territory, the nation continues to exist. Its sovereignty and international legal personality continues to persist. The Dalai Lama, as the spiritual and temporal leader of Tibet, exemplifies this principle. In 1959, the Dalai Lama was exiled and forced to flee. Despite the challenges faced, the Dalai Lama continues to advocate for the preservation of Tibetan culture and garners worldwide support for Tibetan autonomy on the global stage. Similarly, from 1309 to 1376, the Pope of Catholicism had been in exile in Avignon. Despite this, he was recognized as the head of state as well as head of the church and given full privileges of the position after their return to Rome. Even in 1861, much of the papal territories had been lost, leaving the Pope with no sovereign territory other than the papal residence and related buildings. Yet his temporal powers were still acknowledged. He was recognized as a head of state, and later, the Lateran Treaty. सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभं वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदने क्षणं सकलदेवतारूपिणं स्मरेत् शिरसि हंसकं तदभिमानपूर्वं गुरुम्। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ अनन्तपुण्यफलदाय नमः। ॐ अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय नमः। ॐ अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डरूपिणे नमः। ॐ अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डजनकाय नमः। ॐ अजयाय नमः। ॐ अजाय नमः। ॐ अणिमादि अष्टसिद्धिदाय नमः। ॐ आशुतोषाय नमः। ॐ अव्ययाय नमः। ॐ अर्धनारीश्वराय नमः। ॐ अवस्थात्रय विनिर्मुक्ताय नमः। ॐ अव्याजकरुणामूर्तये नमः। ॐ अनाथनाथाय नमः। ॐ आनन्दगन्धनिलयाय नमः। ॐ आर्द्रत्राणपरायणाय नमः। ॐ ईप्सितफलदायकाय नमः। ॐ उष्णीषधराय नमः। ॐ उत्सवप्रियाय नमः। ॐ कलिकल्मषहारिणे नमः। ॐ कर्मफलदायकाय नमः। ॐ कार्यकारणविनिर्मुक्ताय नमः। ॐ कैवल्यपददायकाय नमः। ॐ कृपाकराय नमः। ॐ त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवता सेव्यमानपादाब्जाय नमः। ॐ सर्वकामध्वंसिने नमः। ॐ कल्पतरुमूलवासिने नमः। ॐ कल्पतरवे नमः। ॐ निष्कलाय नमः। ॐ नामरूपविवर्जिताय नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ सर्वव्याधिप्रशमनाय नमः। ॐ सर्वाधिनिवारणाय नमः। ॐ पापज्ञाय नमः। ॐ सहस्रारूढाय नमः। ॐ भक्तहृत्पद्मसृष्टिताय नमः। ॐ सच्चिदानन्दाय नमः। ॐ वेदवेदान्तवेद्याय नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ सर्वसाक्षिणे नमः। ॐ योगनाथाय नमः। ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः। ॐ मायापाशविवर्जिताय नमः। ॐ पशुपतये नमः। ॐ करुणासागराय नमः। ॐ प्रेमस्वरूपिणे नमः। ॐ कालातीताय नमः। ॐ भाग्यवृत्तिपरिवर्तकाय नमः। ॐ सर्वस्वतन्त्राय नमः। ॐ स्वातन्त्र्यदायकाय नमः। ॐ निर्विकल्पाय नमः। ॐ शरणागतवत्सलाय नमः। ॐ बिडदिपुरेशाय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ समस्तकल्याणगुणान्विताय नमः। ॐ परञ्ज्योतिषे नमः। ॐ सोमसूर्याग्निनयनाय नमः। ॐ भावगम्याय नमः। ॐ सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ जगद्व्यापिने नमः। ॐ भवबन्धनखण्डनाय नमः। ॐ भवचक्रप्रवर्तकाय नमः। ॐ दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः। ॐ पतितपावनाय नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ सकलैश्वर्यप्रदाय नमः। ॐ स्वामिने नमः। ॐ रक्षाकराय नमः। ॐ नित्याय नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
ॐ विश्वयोनये नमः ॐ भस्मप्रियाय नमः ॐ भस्मत्रिपुण्ड्रविलिप्तललाटाय नमः ॐ सिद्धवृन्दवन्दिताय नमः ॐ सकलागमसंवेद्याय नमः ॐ रुद्राक्षप्रियाय नमः ॐ रुद्राक्षाभरणाय नमः ॐ भक्तिवश्याय नमः ॐ निराधाराय नमः ॐ निराकाराय नमः ॐ गुणातीताय नमः ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॐ चित्तवृत्तिनिरोधकाय नमः ॐ ध्यानगम्याय नमः ॐ धर्माधर्मविवर्जिताय नमः ॐ नित्यतृप्ताय नमः ॐ निरहङ्काराय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नमः ॐ निर्गुणाय नमः ॐ गुणमयाय नमः ॐ मरणोर्विनाशनाय नमः ॐ समदर्शिने नमः ॐ मात्रामृताय नमः ॐ दीनबन्धवे नमः ॐ मातृभूतेश्वराय नमः ॐ मधुरधिकतिदीक्षावते नमः ॐ सम्प्रदायप्रवर्तकाय नमः ॐ सर्वमन्त्रार्थाय नमः ॐ सौलभ्यपरिपूर्णाय नमः ॐ समाधिस्थिताय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ सर्वशास्त्रार्थाय नमः ॐ पञ्चकृत्यपरायणाय नमः ॐ दिव्यदेहाय नमः ॐ अतुलितशक्तिमते नमः ॐ भवरोगभेषजाय नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः नीराजनम् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि दशाङ्गं गुग्गुलोपेदं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रह्यत्सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः धूपमाघ्रापयामि अथ दीपः ॐ साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यदिव्यावहम् श्रीसर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः दीपं सन्दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा श्रीसर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरमाचमनं समर्पयामि नीराजनम् ॐ साङ्ग्रहण्येश्चायजते इमां जनतागं सङ्ग्रहाणीति द्वादशारत्नेरसना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वैमुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि. Next is the offering of Pushpanjali, the offering of fragrant flowers, with the chanting of the Veda mantras. Let us now offer the Pushpanjali. Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavan Vashaman Bhavade Chandrama va Apam Pushpam पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति. श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि. Next is the offering of the Chaturvedam, the shlokas from the four Vedas. The Vedas are the source scriptures of Hinduism, which is revealed by Paramashiva in his formless state in the Avyakta Bhava. The Vedas are the pure enlightenment signs which Paramashiva has revealed for all of us. Let us now offer this Chaturvedam at the divine lotus feet of the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव जय विजयी भव चतुर्वेद प्रिय चतुर्वेदमवधारय. हरिः ॐ अग्निमीळ पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् ओदारं रत्नधातामम्. हरिः ॐ हरिः ॐ ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्तोपायवस्तदेवो वत्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे. हरिः ॐ हरिः ॐ अग्नायाहि वीतये गृह्णाणो हव्यधातये निहोदासत्सि बर्हिषि. हरिः ॐ हरिः ॐ शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु वीतये संयोरभिस्रवन्तु नः. हरिः ॐ. Next is the offering of the Agama shlokas. The Agamas are the applied signs of the Sanatana Hindu Dharma, where Paramashiva has beautifully revealed powerful techniques for all of us to be able to experience Paramashivatva and manifest Paramashiva's powers. Let us now offer the Agama shlokas at the divine lotus feet of the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashiva. देवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव जय विजयी भव. आगम श्लोक प्रिय आगम श्लोकानवधारय. तया पूर्याशु मूर्धान्तं भङ्क्त्वा भ्रूक्षेपसेतुना निर्विकल्पं मनस्कृत्वा सर्वोर्ध्वे सर्वगोद्गमः. Next is the offering of the Samagana. The Vedic rishis expressed their Shiva Bodha, the bliss, the ecstasy of experiencing Paramashivatva through this very Samagana. Let us now offer this Samaganam at the divine lotus feet of the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. देवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव जय विजयी भव. सामगान प्रिय सामगानमवधारय. एतत् सामगायन्नास्ते हा हूहा हूहा अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्गश्लोककृत अहग्गश्लोककृत अहग्गश्लोककृत
अहमस्मिन् प्रथमजायतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य न भायि यो मा ददाति स देवमावाह अहमन्नमन्नमदन्तमात्मीम् अहं विश्वं भुवनभव्यभवां सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत्. Next is the offering of the stotras. The stotras are compositions of Shiva Bhaktas who, out of their deep Shiva Bhakti, who out of their deep feeling connection, devotion towards Paramashiva, have expressed these stotras, glorifying the Ananta Kalyana Gunas, the unending auspicious qualities of Paramashiva. Let us now offer this stotram at the divine lotus feet or the supreme point of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashiva. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव जय विजयी भव. स्तोत्र प्रिय स्तोत्रमवधारय. दुःस्वप्न दुष्गुण दुर्गति दौर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसि उत्पादतापविषभीतिमसद्ग्रहार्तिं व्याधिंश्च नाशयतु मे जगदामधीशः. ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्राधिष्ठिताय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रविदुराय ब्रह्मरुद्रावतारिणे नीलकण्ठाय पार्वती मनोहराय सोमसूर्याग्निलोचनाय भस्मोद्धूलितविग्रहाय महामणिमुकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिस्थितिप्रलयकालरौद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालभेदनाय मूलाधारैकनिलयाय तत्त्वातीताय गंगाधराय सर्वदेवादिदेवाय षडाश्रयाय वेदान्तसाराय त्रिवर्गसाधनाय अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकाय वासुकितक्षककार्कोटकशङ्खकुलिकपद्ममहापद्मेति अष्टमहानागकुलभूषणाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशाय आकाशदिक्स्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिने सकलाय कलङ्करहिताय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकसंहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकलवेदान्तपारगाय सकललोकैकवरप्रदाय सकललोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजाभासाय निराभासाय निरामयाय निर्मलाय निर्लोभाय निर्मदाय निश्चिन्ताय निरहङ्काराय निरङ्कुशाय निष्कलङ्काय निर्गुणाय निष्कामाय निरुपद्रवाय निरवध्याय निरन्तराय निष्कारणाय निरन्तकाय निष्प्रपञ्चाय निस्सङ्गाय निर्द्वन्द्वाय निराधाराय निरागाय निष्क्रोधाय निर्मलाय निष्पापाय निर्भयाय निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय निःसुलाय निःसंशयाय निरञ्जनाय निरुपमविभवाय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्णसच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तस्वरूपाय तेजोरूपाय तेजोमयाय जय जय रुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वांग खड्गचर्मपाशाङ्कुशटमरशूलचापबाणगदाशक्तिबिण्डिपाल तोमरमुसलमुद्गरपाशमनिकभुषुण्डी शतग्नि चक्रार्यायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकराळवदन विकटाट्टहास विस्फारित ब्रह्माण्डमण्डल
नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक विश्वरूप विरूपाक्ष विश्वेश्वर ऋषभवाहन विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युम् अपमृत्युभयं नाशय नाशय चोरभयमुत्सादय उत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान् मारय मारय मम शत्रूनुच्चाटय उच्चाटय त्रिशूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्दि छिन्दि खट्वाङ्गेन विबोधय विबोधय मुदलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डमारीच वेताल ब्रह्म राक्षसगणान् सन्त्रासय सन्त्रासय माम् अभयं कुरु कुरु विश्रस्तं माम् आश्वासय आश्वासय नरकभयान् माम् उद्धर उद्धर क्षुद्रभ्यां माम् आप्यायय आप्यायय दुःखातुरं माम् आनन्दय आनन्दय शिवकवचेन माम् आच्छादय आच्छादय मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते. Next is the offering of the Dravida Vedam, the hymns from the Dravida Bhasha, Tamil, which is composed by the four great Tamil saints known as the Nalvars. The Nalvars are Trijnana Sambandar, Tirunavukkar, Manikyavasagar, and Sundaramurti Nayanar. Let us now offer the Dravida Vedam at the divine lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashiva. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव जय विजयी भव द्राविड वेद प्रिय अवधारय. हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. சிவா திருச்சிற்றம்பலம். தோடுடைய செவியன் விடையேறிவோர் தூவன் மதிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளங்கவர் கல்வன் ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பணிந்திர்த்த அருள் செய்த வீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனன்றே. சிவா திருச்சிற்றம்பலம். Nithyanandam to all the participants, all the viewers, all those joining us live today for this Uttamottama Seva offering. The offering of the best at Paramashiva, at Swamiji's own feet. The next offering is the offering of the Sangeeta Seva, the offering of the divine music at Swamiji's feet. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवन् श्री नित्यानंद परमशिव जय विजयी भव संगीत प्रिय संगीतम् अवधारय. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम्
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जय नित्या जय नित्या हर नित्या हर नित्या जय नित्या जय नित्या हर नित्या हर नित्या अद्भुत विग्रह मराधीशण गणित गुणगण अमृत नित्या आनन्दामृत आश्रित रक्षण आत्मानन्द महेश नित्या इन्दु कलाधर इन्द्रादि प्रिय सुन्दर रूप सुरेश नित्या उरहादि प्रिय उरह विभूषण नर कविनाशन नेश नित्या ऊर्जित दान विनाश परात्पर अचित पाप विनाश नित्या जय नित्या जय नित्या हर नित्या हर नित्या जय नित्या जय नित्या हर नित्या हर नित्या वेद श्रुति मौक्लि विभूषण रविचन्द्रादित्य नेत्र नित्या रूपमनादि प्रपञ्च निलक्षण ताप निवारण तत्त्व नित्या स्वरूप सर्वबुध प्रिय मंगल मूर्ति महेश नित्या गूढाधीश्वर रूप प्रिय शिव वेदांत प्रिय वेद्य नित्या एकालेक स्वरूप विश्वेश्वर योगी हृदय प्रिय वास नित्या जय नित्या जय नित्या हर नित्या हर नित्या जय नित्या जय नित्या हर नित्या हर नित्या ऐश्वर्याशय चिन्मय चिन्दन अच्युतानन्द महेश नित्या ओंकार प्रिय उरग विभूषण ह्रीङ्कार प्रिय ईश नित्या औलसलालित अन्तकनाशन नित्यानन्द पुरीश नित्या अम्बरवास चिदम्बर नायक तुम्बुरु नारद सेव्य नित्या आहार प्रिय अष्टविलेश्वर भोगादि प्रिय पूर्ण नित्या जय नित्या जय नित्या हर नित्या हर नित्या जय नित्या जय नित्या हर नित्या हर नित्या The next offering at the divine lotus feet of Swamiji is the offering of the Nritta Seva, the offering of the traditional Bharatanatyam dance at Swamiji's feet. Devadevottama Devata Sarvabhauma
अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवन् श्री नित्यानन्द परमशिव जय विजयी भव नृत्यप्रिय नृत्यम् अवधारय। Sitting under the mystic tree, you radiate. The Lord of all illuminate. The vibrant silence around, you can feel it. Allah. At the divine lotus feet of Swamiji is the offering of the Shakti Avishkarana, the offering of power manifestation at Swamiji's divine lotus feet. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवन् श्री नित्यानंद परम शिव जय विजयी भव शक्ति आविष्करण प्रिय शक्ति आविष्करणम अवधारय. Today, for the offering of the power manifestation at Swamiji's feet, we will be manifesting the power of mind reading, the power to scan the root cause of any issues or problems we are facing in life. So I request, if there's any being, any person, anyone watching us live on YouTube that would like to receive a scan through the third eye, to go ahead right now and post your name and your request in the YouTube live chat. One thing we all should remember, this power is gifted to us directly by Paramashiva himself through Swamiji, where Paramashiva says, Hridaye Chitta Sanghata Drishya Swapa Darshanam. By knowing your own inner space, can you know the inner space of any being in the cosmos? Just by connecting, by allowing Paramashiva to manifest through you, Swamiji to manifest through you, any information you want to know can just be known to you. So because of that now, each of us have this opportunity to receive a live third eye scan, and anyone is there who would like to receive it can immediately head to the live YouTube chat and post it in the comment section. And you will be able to receive a live third eye scan from Swamiji through the third eye directly. So if there's anyone else who is there, anyone who would like to receive right now this third eye scan, you can immediately head to the live YouTube chat and post your desire and your request for the scan.
So now I'll be doing a scan for each and every being who's sitting here with us, ready to receive the power of mind reading, to understand where you can have a breakthrough in your own life. I'll chant with the Mahavakya. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. So as I was scanning, Swamiji revealed the main place which we all need to work on is on our gratitude. To feel gratitude towards every aspect of life and whatever life is showering on us, feeling gratitude towards that is the most powerful way each of us can manifest our reality. With that, we come to the end of this Uttamottama. We come to the end of the Shakti Avishkarana offering at Swamiji's feet. Thank you, Nithyananda. सार्वभौमम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकं श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिवम् अष्टपुष्पैरभ्यर्च्य ओं ह्रीं नित्यानन्दासनाय नमः, ओं ह्रीं नित्यानन्दमूर्तये नमः, ओं ह्रीं नित्यानन्दाय नमः, ओं हां हृदयाय नमः, ओं ह्रीं शिरसे नमः, ओं हूं शिखायै नमः, ओं हैं कवचाय नमः, ओं हः अस्त्राय नमः। नीराजनम् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि, रक्षां धारयामि। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव जय विजयी भव। आशीर्वचन प्रिय आशीर्वचनमवधारय। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। इति स्वस्तिमन्त्रार्थाः सत्याः सफला भवन्तु। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। तथास्तु। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।
सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदशतम् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु राजा धर्मपतिः प्रजा सुचरिताः पूजाधना सज्जनाः षट्कर्म प्रवरा द्विजाः प्रतिदिनं विद्या अनवद्या सदा वाणी सन्निहिता चिरं कविमुखैः सानन्दमव्याकुलाः सर्वे सन्तु वैदिकधर्म अनुष्ठातारः सौजन्यसन्तोषिणः इति स्वस्तिमन्त्रार्था सत्या सफला भवन्तो इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु येषां देवदेवानां महादेवानाम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकानां संहार तिरोभाव अनुग्रहाख्य पञ्चकृत्यपरायणानाम् आदिमध्यान्तरहितानाम् अप्रमेय पराक्रमाणां तत्त्वार्थगोचराणां श्री नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवस्वरूपाणां श्री आदिगुरु अरुणगिरि योगीश्वर स्वरूपाणां श्री कालभैरव महाकाली स्वरूपाणां श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामला पीठारूढ श्री मीनाक्षी सुन्दरेश्वरा भिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र श्री चिन्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सत्यो निर्वाण दीक्षा व्याप वर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमदकल भगेसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहारह तुजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद ऋषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानाम् अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधानानाम् कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानाम् नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तॄणां साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्याद्यनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्ताभिषिक्त चूड़ामणीनां साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र महामंडलेश्वराणां साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अड्लपीठ अष्टोत्तर सहस्रतम पीठाधीश्वराणां धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्पन्न पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधानानां कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरूणां श्री कैलास पुनरुद्धारकाणां श्री कैलास परमाचार्याणां श्रीमत् परमहंसानां परिव्राजकाचार्यवर्याणां सच्चिदानंद प्रणव स्वरूपाणां श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठानां श्रीमज्जगद्गुरूणां श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्धिः समेषां सहकुटुम्बानां सकलैश्वर्य प्राप्तिः गुरुकृपा कटाक्ष सिद्धिः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धिः अरोग दृढगात्रता सिद्धिः आचन्द्रार्क वंशाभिवृद्धिः धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धिः सर्वेषां मनसा चिन्तित सत्कार्यानुकूल सिद्धिः सर्वदेव देवी स्वरूपस्य भगवत् श्री नित्यानंद परमशिवस्य पादारविन्दयोः अचञ्चला भक्ति सिद्धिः भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्तिश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु तथास्तु
सर्वेषां शान्तिर्भवतु तथास्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु तथास्तु सर्वत्र नित्यानन्दध्वजारोहणं भवतु तथास्तु सर्वेषां श्री भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव श्री ज्ञानसम्बन्ध देशिक परमाचार्य स्वामिनां परिपूर्णकृपाकटाक्षसिद्धिः अस्तु तथास्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तरमभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सर्वं भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम् कोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तम्भस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगभट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकवत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै मङ्गलम् कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्रे नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलम् गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम् परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् हरिः ओम् तत्सत् सर्वं भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिवपादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम्